हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ लिया है, आई एम गोइंग टू बी ट्राइंग फॉल्स आई लैशेस टुडे। तो मैंने बहुत टाइम से इंस्टाग्राम और यूट्यूब और हर जगह देखती हूँ कि लोग फॉल्स आई लैशेस यूज करते हैं, बट ना मुझे बहुत डर लगता है यूज करने में, क्योंकि उसको ऐसे करके वो लोग उतारते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि माई eyelashes are going to come off with them because you use a glue and everything, so I don't really get the concept. but मेरे को ना बहुत ज़्यादा आजकल Instagram पे हर जगह ही everyone was like using it, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं. So the eyelashes that I got, they are from this brand called Calailis. Oh, why am I so uneducated? Okay, so these are from this brand. जो प्रोनाउंस करना है आप कर लो. So ये वाले गिर गए हैं. Like I got these 2 months back and I haven't yet gathered up the courage to use them. मेरे को अभी भी 2 महीने से ये पड़े हुए हैं और बिल्कुल भी कुछ भी इतना वो नहीं है कि मैं इसको यूज करूँ. बट हाँ, ये मैंने इसलिए मंगाया बिकॉज दे वर काइंड ऑफ अफोर्डेबल और इसका रिव्यू भी काफी अच्छा था. दे आर रीयूजेबल. इसमें 3 डिजाइन आते हैं. ऊपर वाला जो गिर गया उसको इग्नोर करो. आई थिंक ये सबसे डेंस है या फिर ये सबसे डेंस है, आई डोंट नो. और हाँ, इसके साथ ही ग्लू भी आती है पीछे. सो इसमें पीछे लिखा हुआ है हाउ यू हैव टू यूज इट. सो आई एम गोना यूज इट टुडे इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, ताकि आई जस्ट वांटेड टू डॉक्यूमेंट दिस प्रोसेस एंड ऑल्सो शो यू गाइस, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूज करना चाहते हैं बट कभी यूज किया नहीं है. तो आई जस्ट थॉट कि आप लोगों के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा. सो या, दैट वाज अ वेरी वेरी लॉन्ग इंट्रो. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो आई लैशेस तो सबसे लास्ट पार्ट है. उससे पहले I'm gonna put on a little makeup. मैं बहुत ही मिनिमल मेकअप करने वाली हूँ. द मेकअप दैट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग मेकअप, मतलब 2019 के आसपास मैंने ये वाला स्टार्ट करा था. 1-2 स्टेप मैंने ऐड कर दिए हैं बट मोर और लेस बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है. बहुत ईजी है, 5 मिनट लगते हैं. तो अगर आपको डेली मेकअप कोई भी चाहिए ना, बहुत ही अफोर्डेबल और क्विक, तो आप ये वाला मेकअप लुक ट्राई कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट स्टेप इज अ कंसीलर. Now I have this concealer 2019 से. Like you can see कितना ज्यादा ये खत्म हो चुका है. बहुत ही थोड़ा सा यहाँ पे बचा है. मैं किसी भी तरह शिद्दतों से इसको निकाल लेती हूँ, but I really like this concealer. My shade is 10 light. So I'm just gonna apply it and not apply it like over a lot of areas. बस थोड़ा सा लगाना है. Okay, so I'm not going to apply it more than this, and now I'm just using my fingers to blend the concealer in, because जो आपकी fingers में warmth रहती है उससे concealer बहुत अच्छे से blend हो जाता है. और हाँ, I already washed and moisturized my face. उसके बाद ही मैं concealer लगा रही हूँ. तो आपको सीधा मुंह धो के concealer नहीं लगाना है, पहले आपको moisturizer जरूर यूज करना है. So I'm just gonna use my fingers and blend it all in. ऊपर की तरफ देखते हुए ब्लेंड करेंगे ताकि जो भी हमारी आंखों के नीचे लाइंस वगैरह हैं उसमें भी अच्छे से ये कंसीलर सेट हो जाए और कोई भी लाइंस आपको नजर ना आए कंसीलर लगाने के बाद. So now that my face is concealed, the next step is to set the concealer. क्योंकि गर्मी हो या सर्दी, मेरा कंसीलर तो बहुत मूव हो जाता है क्योंकि मेरे फाइन लाइंस हैं आईज के अंडर और बहुत लोगों के आंखों के नीचे रहती भी हैं, तो यहाँ पर ना क्रीजिंग होने लग जाती है, which looks really really bad. So it's important to set your concealer. So for that I'm using the Maybelline. Oh my god. Oh, the Maybelline Fit Me Contact. So I'm using the Maybelline Fit Me Compact Powder and this is in the shade 112 Natural Ivory. तो I'm not going to use a lot of it क्योंकि फिर ना बहुत पाउडरी सा फेस लगने लगता है. जो भी शाइन रहती है it goes away and we don't want to lose our glow. तो थोड़ा सा यूज करेंगे. So I'm gonna use the sponge sheet which comes with the compact. It's pretty good, तो मैं इसी को यूज करती हूँ. I don't use any other brush अलग से. So I'm just gonna use it in the areas where I just concealed. Especially under my eyes ताकि creasing ना हो.
जहाँ पे ऑयल आने का ज़्यादा चांस रहता है फॉर मी, बिकॉज लाइक आई हैव नॉर्मल स्किन बट मेरा टी जोन काफ़ी ऑयली हो जाता है और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्वेट आता है. सबसे पहले मेरा पसीना यहीं पे आना स्टार्ट होता है, मेरी मूछें बन जाती हैं एंड दैट्स वेरी एम्बैरसिंग. सो यहाँ पे लगा लेती हूँ. So with that being done, it's time for a little blush. बहुत ज़्यादा blush नहीं लगाना, थोड़ा सा ही लगाएंगे. बट सबसे पहले मैं अपने eyelids पे blush लगा लूँगी क्योंकि eyelids पे concealer कभी कभी crease हो जाता है. So I'm just gonna set it using a blush, using this blush as an eyeshadow. काफ़ी लाइट आई शेडो लगाऊंगी, मतलब देखकर पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपने लगाया. इफ़ यू वांट ऑब्वियसली यू कैन मेक इट अ लिटिल डार्क, बट आई जस्ट लाइक टू कीप इट लाइट. Okay, so that is also done and I'm just gonna put a few dabs in my cheek. This is the Wet n Wild blush brush. तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ हमेशा से. मुझे आई थिंक 2-3 साल हो गए हैं ये दोनों प्रोडक्ट्स को मंगाए हुए, और ये मैंने पता नहीं कब मंगाया था और ये तब से बिल्कुल उतना ही है, लाइक वेरी लॉन्ग लास्टिंग. दिस इज फ्रॉम Faces Canada, the Glam On blush from Faces Canada in the shade I can't see the shade, but I'll link it down if I find it. So I'm just gonna dab it here and put. तो ब्लश भी हो गया. नाउ इट्स टाइम फॉर अ लिटिल बिट ऑफ हाईलाइटिंग. सो आई एम यूजिंग दिस मास्टर स्ट्रोबिंग स्टिक फ्रॉम Maybelline again. एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी सटल हाईलाइट. कुछ भी पता नहीं चलता ऐसे कि आपने हाईलाइट बहुत ज़्यादा थोप रखा है. तो इट इज़ लाइक वेरी गुड फॉर डे लुक्स इफ़ यू वांट अ सटल हाईलाइट एंड डोंट वांट टू बी टू आउट देयर. ठीक है, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगी अब. एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फिल इन आवर ब्राउज. आईब्रोज के लिए मैं हमेशा से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ द ब्राउ गर्ल ब्राउ डिफाइनर बाय नायका. आपने मेरी कोई भी अगर मेकअप वीडियो देखी है ना तो मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ. अभी मैंने दूसरा ऑर्डर कर दिया है बिकॉज एज यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट गॉन. इतना सा ही बचा हुआ है ये. तो अभी मैंने दूसरा ऑर्डर कर दिया है, लाइक ये नहीं, दूसरा प्रोडक्ट. बट आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ब्राउ पेंसिल यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट. लाइक दिस इज अ रियली गुड प्रोडक्ट. So I think I'm happy with how my brows look right now. अभी सिर्फ 2 स्टेप बचे हैं, which is mascara and lipstick. तो फटाफट से वो कर लेते हैं because now I'm really getting excited to try on those lashes. So that is also done and now the final step is lipstick, जिसके लिए I'm using the Nykaa Wonder Puff lipstick. It is in the shade Buck Up Buttercup. So I'm just gonna use it and इसको यहाँ से ना नीचे ऐसे push करते हो तो प्रोडक्ट ऊपर आ जाता है. लाइक आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट. So with that I complete the makeup look और I think the makeup look turned out to be very pretty. कुछ भी ज़्यादा नहीं करा and still it looks really nice. But the video is not complete क्योंकि जो मेन चीज़ हम करने आए हैं वो अब करने वाले हैं. तो इसका मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ा है, तो इसमें लाइक लेट मी जस्ट रिमूव दिस प्लास्टिक, वरना आपको प्लास्टिक की आवाज़ आती रहेगी पूरा टाइम. तो इसका फर्स्ट स्टेप इसकी आप इसको अपने आई लैशेस पे रख के देखो और जितना एक्स्ट्रा है, अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो आप उसको ट्रिम कर लो. तो चलो अब ये भी करना है इसमें. तो आई एम थिंकिंग दैट आई शुड यूज़ पहला वाला यूज़ कर लेते हैं यार, वो ऑलरेडी गिर रहा है, कर ही लेते हैं उसको यूज़. सो लेट्स ट्राई इट नाउ एंड सी इफ आई नीड टू कट इट ऑफ और समथिंग. पूरी सीधा कहाँ से है? I think I look so funny right now. Okay, so I think the fitting is fine. तो मेरे को इसको काटना तो नहीं पड़ेगा. तो अभी next step is to apply glue. So this is the lash glue which came with the product.
So I'm gonna use it. So if my eyelashes fall today, you all will be the witness. एक लाइन बोली और ग्लू सूख भी गई. Can't really see a lot of glue, but इन्होंने कहा है कि wait for 30 seconds. Oh God, this camera does not want to focus today. So they said wait for 30 seconds. So I'm just gonna wait for 30 seconds. How do people do it every day? Am I supposed to do it like that? I don't know. I think I'm not supposed to apply it with my hands first of all. Like पहली बार तो हाथों से नहीं लगाना चाहिए था शायद. यार ये आगे से ऐसा निकल सा रहा है. Do you see that? It looks so odd. अगर इतना है तो इट लुक्स रियली प्रिटी, बट ये जो चीज है यार ये आगे से जा ही नहीं रही. व्हाट डू आई डू? व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग? कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग. ओके व्हाटएवर, आई एम गोना लीव दिस आई और मैं अब दूसरी ब्लैश लगाने का ट्राई करती हूँ इफ दैट इज एनी लक. सो लेट्स मूव देयर. सो आई डिसाइडेड टू कट ऑफ दोनों का आगे से थोड़ा. काटना तो नहीं पड़ेगा. And I think now it looks kind of fine, but I look really wild to me. This is not something I would be able to do और अभी भी perfect नहीं है. But I think कि अगर मैंने eyeliner लगाया होता ना तो let me zoom you in. अगर मैंने eyeliner लगाया होता तो ये जो पार्ट ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पे ब्लैक स्टार्ट होता हुआ, आई थिंक वो नहीं दिखता. एंड ऑल्सो ये वाला इस वाले से ज़्यादा बड़ा क्यों है? लाइक सी ये कहाँ तक जा रहा है और ये कहाँ तक. लाइक आई फील प्रीटी वाइल्ड एंड this is not something that I would do. Like hats off to everyone who does it. Like या तो मुझे आ नहीं रहा करना. I think I need a tweezer or an applicator or something like that. But मेरे पास अभी नहीं है. But I think this is the best I could do. मैंने काट भी दिया यार. अब तो इनको अगर बर्बाद हो गए तो मुझे पता नहीं. I'll come to know. But this is what I could do. So yeah, I hope you guys enjoyed this video. But हाँ अभी मुझे इसको निकालना भी तो है ना आपके आगे. So let me try to remove this one. ही ज़्यादा बुरा लग रहा है तो इसको हटाती हूँ. It came out pretty quick. So I think I'm just gonna leave it like that. वैसे I think ये वाली आँख अच्छी लग रही है. Like on camera it looks really good. अभी real life में अगर आप मुझे ऐसे देखोगे तो you definitely come to know कि मैंने ये कुछ ज़्यादा तड़क भड़क कर रखा है. But I think on camera it looks really nice. So I hope you guys enjoyed that video and that was a really different kind of a video I did. और अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और भी चीज़ें ट्राई करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो. I'll be happy to try them out. So yeah, I'll see you next time. Till then, take care. Bye.